I'll give you a very good real life example which happened to me by offering a free service. Facebook पे you have a lot of these groups, artists के लिए, producers के लिए, all over the world. I offered mastering for 5 songs free because उसमें सबसे कम time लगता है mastering करने में, right? Um, After that, this page called Wall Scout who signed me eventually, right? They saw me, and now I'm getting $120 per song, per mastering, जो मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं. So you have to know, That's which हाँ. type of services for you have to, you have to know your strengths and And weaknesses. you talk Yeah. about free beats. If you're not able to charge them, go for it, bro. We will have a split on audios. 70 Hmm. 30, 80 20, 90 10. Go for it, bhai. Exactly. Exactly. You need to respect yourself first, bro. तुम्हारी I आर्ट को अगर agree, तुम खुद man. रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, nobody will, bro. Exactly, man. Stop giving out free beats, guys. If you believe in someone and if you're friends with someone, वो अलग बात है, but have value for your art, guys, please. Yeah. Yeah, of course. इसी पे क्वेश्चन भाई है, मेरा we'll just wrap क्वेश्चन it, bro. था हाँ. मेरा क्वेश्चन था कि लाइक जब आप कुछ लिखने बैठते हो, जैसे मैं भी कभी कभार लिखने बैठता हूँ अपने लिए कुछ रैप या कोई भी लिरिक्स, तो मैं एक टाइम पे आके ब्लैंक हो जाता हूँ कि इसके आगे अब मैं क्या लिखूं. तो हाउ टू इम्प्रूव दैट? भाई लीव दैट ना, मत कर, फोर्स मत कर. मैं 4 दिन से नहीं लिख पा रहा हूँ, ब्रो. मैं 4 दिन से Same. नहीं लिख पा रहा हूँ. मैं एक ही गाने पे अटका हूँ. मैं नहीं लिख रहा हूँ. मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ. मैं क्यों Hmm. करूँ ब्रो? मैं फोर्स करूंगा ना, मैं और फक्ड अप होऊंगा. मैं खुद को वो करूंगा यार, अब नहीं बन रहे गाने एंड ऑल करके. जस्ट चिल भाई, जस्ट चिल. मेरे से नहीं हो रहा था. आई जॉइंड दिस, नाउ आई हैव बहुत कुछ ब्रो. नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग इन माय माइंड गोइंग ऑन. तुम्हारे क्वेश्चन सुन के, तुम्हारे आंसर सुन के, यू सी दैट्स अ रिफ्रेशमेंट ब्रो. तेरे को ये थोड़ी है कि भाई किसी ने तेरे को मार के बैठा रखा है, भाई लिखना ही लिखना है. आहा, तू 6 दिन में एक गाना कंप्लीट कर, तू 6 महीने में एक गाना कंप्लीट कर. Hmm. डोंट फोर्स हाँ, इट. लेकिन एक फिर मैं कभी कभार लिखने बैठता हूँ, मैं 10 दिन बाद लिखने बैठा या 15 दिन बाद, मेरे से तब भी नहीं होता, या ब्रो, मेरा ऐसे 10 10 दिन बीट छोड़ भी तो नहीं. नहीं सकता ना. इट्स नॉट लाइक कि तू छोड़ ही देगा. अगर तू नहीं लिख पा रहा तो छोड़ ही देगा. यू कीप ऑन राइटिंग कोट्स, यू कीप ऑन राइटिंग लाइंस. गाना लिखना जरूरी नहीं है. सबसे बड़ी बात होती है ना, राइटिंग इज सेकंड पार्ट ब्रो. पहले तेरे को सुनना आना चाहिए. यू यू तुझे हाँ, पढ़ना पड़ेगा ब्रो. टू ओपन योर राइटिंग स्किल्स, यू हैव टू रीड ब्रो. यू हैव टू रीड. Yeah. एक्सपेंड थॉट्स. या ओके. डन. बट भाई लाइक टॉपिक भी पे तो डिपेंड करता है ना कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो. हाँ, फॉर श्योर टॉपिक इज मेन भाई. टॉपिक इज मेन. नहीं, अगर वो इंसिडेंट हुआ है तो वो इजी रहेगा ना लिखना. या हाँ, दैट इज व्हाट बेनिफिट्स मी ना भाई. सही बात है. Brother, I actually have one question regarding your process in the studio, if it's fine. Yeah. So, bro, आप generally studio पे record करते हो या घर पे करते हो या it's a mix of I, both? I have a home, not studio. I just have a mic. I just have a sound card, and just use a pop filter, bro. I don't have any surroundings. Um, I have an open area, bro. To be honest, I just have a room. There's no surrounding. There's no foams and all. It's just like Mhm. raw vocals. Okay, so And when then you're how? collabing with someone, Sorry. so when you're अतुल भैया एक collabing with क्वेश्चन है. another artist on a beat, Uh-huh. what are some best practices that you have, to make sure that you guys are on the same page? I don't ask someone like what most of the people is like. They send beats to some rappers and then they say, "Ki bro, write it down and send it to me." I don't do that. I write my part first so that I don't have to give a fuck what he's writing. You understand that? Now, what I have written, I'll send it to him. Now he have to work according to me. Oh Mhm. yeah. See that's how you. That's like even if I'm collaborating with Raftar, Amiwa Vantai Talanjum, I respect them. I respect them, but I have to outshine them. Mhm. And Hmm. for me, I'll write first. See, if you have a gangster type beat, okay. So before sending it to Raga Bhaina, I'll do. I have that in mind. I'll go poetic in that. I'll go Mhm. poetic in that. ठीक है. Hmm. So now Raga Bhai will be in confusion कि भाई gangster beat पे he went poetic. Now I have to write according to him. Mhm. Yeah. Yeah, so that's how you own up to shit, bro. Like ठीक है bro, नहीं है ना. You give other rapper, you give your competition to work according to you. Not you don't take orders, bro.
Okay, so bro, but now in this case, right now, suppose, because let's be honest, right? Like as artists and all, we have, not we, but generally we rappers have a little bit of ego, kabhi kabhi, right? Like in terms of like not being told what to do and like all that stuff. Kuch kuch ke liye, I'm saying. Now, generally, some people actually take that sort of action in a very negative way, right? Hmm. Like, have you ever come across such situations when you've collab with someone and you can feel यार energy नहीं match हो रही, यार ये बंदा सुन नहीं रहा इतना Yeah, ज़्यादा? yeah, I have 2 3 collabs जहाँ पे I don't find worth it सामने वाले का words, but I Mm. can't say it to him. You understand that? He's more Mm-hmm. known to me, he's more famous to me. It's Mm-hmm. like people will judge you in your 30 seconds, not the whole song. Mm-hmm. Yeah, so that's how it goes, bro. That's how it goes. He, you see, if I have a collaboration with XYZ rappers and he's just whack in that track, let's say for an example. So Mm-hmm. people will not abuse me, people will not judge my skills on his words. They will judge onto my words. Correct. Yeah. Comments down there will be like, bro, Kalam Inc ने फाड़ दिया 30 सेकंड में, Kalam Inc का part was good. You Mm-hmm. don't have to give a fuck about the beat, the other rapper, what he's spitting. It's just you, bro. You have to outshine. But bro, अगर वो तुम्हारा गाना है, isn't it like more important that the You song have to, हाँ as a ठीक है, फिर whole should sound? then it depends, bro. अगर वो बंदा more known है, you know how to reach. You can't say ना भाई तेरा So it ये depends वैक है. situation to situation, basically, right? हाँ, if he is more known Mm-hmm. to me, I can't just go onto him कि भाई यार अच्छा नहीं लगा दोबारा वर्ड्स भेज दो. वो क्यों देगा bro वर्ड्स? He is more known to you. He is more famous to you. It's your responsibility. Now, what I can do is I can't tell him to rewrite words. I can't tell him भाई vibe नहीं आ रही. You So can what I'll, try to blend yourself. yeah, you try to blend yourself. I'll tell my producer कि भाई इसके पार्ट में बीट चेंज कर दे, या इसके पार्ट में I'll give my ad libs, मैं उसके पीछे से vocals रन कर दूंगा खुद के, just to make his part look good. Mm-hmm. You Oh have to yeah, give makes your sense. efforts, bro. If it's your Yeah. track, you have to give it 100%. और तब भी नहीं हो रहा है, then you need to have those guts कि तुम बोल पाओ कि भाई ठीक है, it's not having a vibe, let's delay it. Bro, because मेरे साथ एक scene अभी like there's a track on hold of mine. It's with a much bigger artist than me, right? But very, very honestly, bro, his verse was ass. Like his verse Hmm. was ass, and I don't have the heart to tell him because again, like You I don't don't post want to it, bro. ruin You don't connections, post right? it. Send him a message. You Mm-hmm. need to have straightforward. If you think it's not worth it, say it. Mm-hmm. कि bro, the vibe नहीं आ रहा है. I don't think it will run. To be honest, I See, said it to मुझे some of, visibility तो ज़्यादा मिलेगी ये बात है, but you but know, as a you Then don't as a go as for want. it. these. You don't. Then go for it. Mm, Then Yeah, you go have. for it. तुम्हें तुझे वो झेलना भी आना चाहिए, bro. Visibility you're right. मिलेगी, but it will portray a You're right. bad image also. But Yeah. see, there are two type of fame: No, good fame, bad fame. as you Mm-hmm. previously mentioned, even if his verse is bad, you go with your hardest verse. People But will that's my praise you. song, right? Like, see, I like, know that. no, no, See, yeah, it's my song your though. I have that to make sure, as you know, I someone get who's it. putting out something, That that I'm meeting that a. that bigger artist will Mhm. be a mean of attraction for True, you're right. wider You're right, man. audience, You're right. You're right. and to Exactly. that wider audience you can Mm-hmm. show your shit, that that's how Mm-hmm. I do, Hmm. right? You're right. You And you then you you see, can impress the wider audience. you only just have just that. don't just don't Sorry, sorry, overthink, sorry. that's what I'm saying. No, I'm it's okay. actually You gonna change my voice now. I'm gonna go extra hard and then put it out. Yeah, I'm actually gonna Yeah. do that. you see, you'd only have, like, if you're collaborating with some big artist, now you have that what's the exposure in that song and उसके बाद वाले song तक. See, you know what I'm saying? कि like if you're dropping Mm-hmm. a track with me, उस track में you will have interaction and people will wait for your next track. Third track you True. don't have any Yeah. interaction, so it's on you how you put the second track, and that is when you talk about MC Stan. Hold on, y'all niggas After playing with me, after man. all I that am diss the and all, young he mega. he Beast made knew bowling game. कि Yes, I भाई ain't go to I have adjust me and attention. listen with He phone dropped letters. 30 par, bro. That's how you market. That's how you grab Yep. opportunities. Anyway, one time after the diss, he knew कि यार मेरे पे बहुत सारे he dropped मचाएंगे. Mm-hmm. See, that's how it goes. उस पे भी bad image था ना, bro. MC Stan was also getting abused and all, Mm-hmm. Yeah. but By the he way, know what कि is उस your पे thoughts exposure है. on his latest album though? Like, I didn't I, hear I, your. I love him, bro. I supported him. Everybody Mm-hmm. knows. I wasn't in news. I Mm-hmm. was getting hate, but yeah, I loved it. 2 3 tracks were not of my taste, but if you talk about the album, it was on loop for
like 15 to 20 days. It was on I loop. think for me, was that Hasti Ka Basti? I think that's a song, right? Yeah. In that album. Bust. I think that Yes. that song slaps hard. I think that song Yeah, slaps bro. hard. For me, I it think was that That. should regret. For me, it was regret. really. Mm, Yeah. wow. Re- How? reg- How come? regret. Okay, okay. You mean the song "Regret," right? Yeah, yeah, yeah. Oh, Oh, thank. I was like, what? I was like, is it a regret listening to that Nah, nah, song nah, 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 or nah, nah. what? For Yeah, me, yeah, yeah. regret was something which is like, if I have to make it a remake, I'll make it, bro. I'll make it. Like, I don't give a shit कि मेरे पे copyright claim आ रहा है, मेरा channel delete हो जाएगा. I have that much That's connection crazy. with that Yeah. song. Regret. That's amazing, bro. Mm. Actually, regarding collaboration, like you mentioned, a bigger artist and all that, right? In that album, right, the MC Stan and Raftar collab, right? Huh? Um, Yes. bro, I have to be honest. Like, I love both. In fact, Raftar is someone like he's energy. Can't like say anything else. But his verse on that song, bro, I didn't feel it. Like, Bro, you see, um, you do some things in DHS out of respect. MC Stan is the only artist who mhm, has more hype than everyone out there. Even if you talk about right now, Divine, yeah. I can say Mhm. it on face, bro. If you talk about fan base, if you talk about hype, MC Stan is more hyped than Divine, than any known rappers, according to me. Okay. Hmm. You Mhm. understand? He is the only one who dropped an album like fuck bro, एक बारी में उसने album निकाल दिया and it was all trending. You abuse him, you say anything to him, but Mhm. he had that hype, bro. No promotion, no gimmicks, nothing at all. Mhm. Mhm. For me it was a huge move, and that's how you do an album, right? एक ही दिन में out करते हो. You don't No, no, go. I'm talking about Raftar's verse in that song. Like, Yeah, so like that I'm saying yeah. that like Okay. उसको MC स्टैन को फर्क नहीं पड़ता था कि अगर उसमें इक्का भाई या रफ्तार भाई का वर्स होता, उसके एल्बम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रो. Mhm. Mhm. ठीक है, No, उसकी no, हाइप no. उतनी I'm ही थी. talking about the delivery of his verse. Like, did you like the Raftar verse on that song? आई लव्ड, मैंने तो सुना भी नहीं होगा. लाइक मैंने एक ही बार ही No, सुना I होगा. liked it. मेरे को लकी टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इक्का भाई वाला सुना था मैंने. एंड Mhm. मेरे को लाइक पहली बारी में वाइब नहीं आती ना मेरे को उसमें, मेरे वो उन दोनों गानों में मेरे को एमसी स्टैन से भी वाइब नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट. फॉर मी इट वाज Yeah, अ yeah. नो गो Same, ट्रैक फॉर मी. same. तो मेरे को स्टार्टिंग में वाइब नहीं आती. आई डोंट लिसन कि जस्ट बिकॉज उसमें रफ्तार भैया का वर्ड साल को लिसन टू इट. इफ यू टॉक अबाउट लिरिकल, इट वाज गुड. But you have to respect Raftar and Ikka to leave their genre and go with MC Stan, bro. To match MC Stan flow, to match his music, you need to have guts. Raftar doing that auto tune and that flow, it was a risk. You understand that? Definitely, Yeah. definitely. So that was it for me. But yeah, I love the Ikka part and all, Raftar bhaiya ke lyrics and all. But usually we can't say things like we are in DHS, so it will be a controversy out there. Hmm. Yeah. So done, yaar, Sahil. Like I have to go, Okay. mere Kalam bhai, I bhai. have a question, Yes, please. yes, Hi, yes, bro. hello. It's actually 4 a.m. in the morning मैं वही for कह रहा me. हूँ. I have to go, Can bro. I I हाँ, have ask to hello, you go. one hello. more? Yeah. Yeah, Hello. yeah. Okay, last two questions. Last two. Yeah, I was about to say. Can I go for it? Yeah. Yeah, भैया yeah, डिस sure. गेम पे रिएक्शन. Uh, yeah. Okay. No dis. Okay, next question. Yes, bro. You Hello, you Kalam can go bhai. with. Hello, Kalam bhai. Hello. Aviral. Actually, my question is a little apart from music. Like, I've listened to all your songs and I know what you must have gone through. I'm going through a similar phase in my life. So, मुझे बस ये पूछना है कि आपने उस टाइम उस चीज से डील कैसे किया, फिर ओवरकम कैसे किया? Bro, you ठीक है यार. For me, मेरे को नहीं पता मेरे को लोग कैसे जज करेंगे इस बात को लेके या क्या. You don't have to overcome anything, bro. You need to learn how to live with it. You can't overcome anything, bhai. Facts. You cannot, bhai. This is shit, bhai. Facts. You Yeah. can overcome. You have to live with it. Yes, देखो exactly. देखो देखो वो चीजें अपनानी पड़ेंगी कि ठीक है. इफ यू लॉस्ट समवन, इफ यू लाइक तेरे साथ कुछ हुआ है ना, यू कांट से कि भाई मैं इसको भूल जाऊंगा. यू कांट Yes, भाई. exactly. यू मतलब हैव टू मुझे लोग लिव ऐसे विद बोलते हैं कि दैट. कर जाओ, भूल जा, but it is not that easy, I guess. हाँ, तो लिव विद दैट ना. ठीक है, तुम बोल ठीक है मेरे साथ हुआ है, आई एम डन, ओके हो गया. लर्न फ्रॉम दैट ना. ट्राई टू लर्न, लिव विद इट भाई. यू कांट टू कि भाई मैं भूल जाऊंगा या मूव ऑन कैसे कर लेते हैं. यू कांट मूव ऑन एनीथिंग भाई. यू कांट मूव ऑन. यू से कि यू कैसे समझाऊं यार. बट मेरे फॉर मी इट्स लाइक बहुत क्लियर आंसर है. यू Hmm. कांट Yeah, मूव yeah, I ऑन get it. Yeah. विद थिंग्स. Bro, Bro, you are तुम better than भूल that, कैसे bro. सकते हो? You are so much better than that, bro. Never forget it and love yourself. Thank you so much, Yeah. bro. And one Yeah. चल. last That's question. question. true. So Actually, please, can I go for it, please, please? बोलो बोलो Uh, ब्रो. Yes. Yes.
Actually, I've Uh, been producing for almost 2 years, and like Mm-hmm. whenever I send my beats to underrated artists that are known in the scene or my producer friends, they obviously appreciate it. And but I haven't even managed to sell a single beat till now. But like तो जैसे मैं देख किसी को अविरल भेजता हूँ, अविरल जैसे अविरल I've अविरल done a सी song सी with सी Big Star. मेरे Yes, को पता है मेरे को पता है मेरे को पता है तूने मुझे इंस्टा पे मेरे को सेंड yes, करा yes, तूने मेरे yes, को बीट पैक भेजा है एंड मैंने तेरे को अप्रोच भी करा था कि ब्रो आई हैव दिस योर बीट मेरे को बता yes, इफ यू वांट टू exactly. कोलैब इट्स नॉट अबाउट सेलिंग मेरे भाई सी टू बी ऑनेस्ट if you are good with your home background money and all thing you don't need to send ठीक है there are different thing if you want your art to shine bro you don't have to give fuck about money now if you talk about things जो तूने बिग स्क्रैच को बीट दी थी बिग स्क्रैच also chose that beat तूने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा Yes, था राइट exactly, exactly. I'll let everyone know here कि जो मैंने बीट इसने मेरे को बहुत बीट पहले भेजी थी यार टू बी ऑनेस्ट इसने मेरे को 6-7 महीने पहले बीट भेजी थी बट मैं नहीं देख पाया मैंने उस पर गाना लिख दिया था बट मेरे Okay. दिमाग में इतना नहीं था कि आई जस्ट अप्रोच टू हिम एंड से कि भाई Beat मेरे पे चाहिए. ये है बीट चाहिए Hmm. सो जब मैंने इसको अभी एक हफ्ते पहले करा तो आई सॉ कि बिग स्क्रैच ने वो ऑलरेडी ले रखी है Hmm. ठीक है सो अब मैं ये नहीं बोलता मैं भाई मेरे पे वो इतना वाइबी गाना है ना ब्रो आई कैन इवन Hmm. पे यू अ लाइसेंस फॉर दैट समझ रहा है मेरे पे इतना Hmm. वाइबी गाना है Hmm. बट मैं हाँ. नहीं कर सकता क्योंकि नाउ बिग स्क्रैच हैव दैट वो मेरा फॉल्ट Somebody था कि मैंने else तेरे को को मिला है. अप्रोच नहीं करा दैट इज नॉट बिग Yes. स्क्रैच फॉल्ट कि उसने चूज कर लिया दैट इज माई कि मैं तेरे पे अप्रोच नहीं कर पाया सो डोंट हाँ. लूज होप यार कि लाइक सेल नहीं हो पा रहा है ये नहीं हो पा रहा है सेल करना भी क्यों है भाई यू टॉक अबाउट बिलीव तेरे को इतना मिलेगा ना ब्रो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से यू हैव टू लाइक being a producer you sell your beats if you're not getting sales from your beat try to make remakes and upload it on Spotify and streaming platforms meri jaan Yes. you will have money from streams Refix music is the biggest Refix example. music यार you talk about Refix music वो कैसे अर्न कर रहा है ब्रो you know DHH में you talk about तला अंजुम you talk about like I'm not DHH में बहुत कम रैपर्स हैं but जो बड़े बड़े रैपर्स हैं मेनली दे डोंट गिव अ स्ट्राइक ऑन उनके वोकल्स में अगर तू थोड़ा टेम्पो वगैरह चेंज कर देगा थोड़ा इफेक्ट डाल देगा ना कॉपीराइट नहीं आता ब्रो यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ इंजीनियरिंग इनसाइड यू कि कैसे Yes. बचना है कॉपीराइट से Yes. एंड जस्ट बाय Yes. एडिंग रफ्तार एमयूएस एंड स्टैन इनके नहीं. नाम ना यू विल हैव मिलियंस ऑफ व्यूज भाई Of course. Of course. Okay, Of okay. course. Thank you so much. Thank you so much. ठीक है डन चलो Thank you. Okay. थैंक यू सो Before मच we go, I just have to say थैंक यू टू कलम इंक एंड एवरीवन जो भी यहाँ पे आए यार हैं जितने भी बंदे आए हैं सपना थैंक यू है सो मेरा मच गाइस अतुल नो भाई से गाइस मिलना एक बार। रियली रियली थैंक यू Sure. सो मच Thank इट you वाज so much, फन guys. साहिल भाई एंड मैं इस चीज को और ज्यादा कंटिन्यू रखूंगा एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं डिस्कॉर्ड पे रेगुलर नहीं हो पाता हूँ विद द चैट्स बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू सो बट ऐसे सेशंस हम जरूर रखेंगे हफ्ते में एटलीस्ट एक बार एंड आई विल ट्राई कि मैं जितने अलग अलग आर्टिस्ट को लेके आ पाऊँ उतनी अलग अलग चीजें हम साथ में सीखें एंड यू नो वी ऑल ग्रो टुगेदर सो होपफुली देर Yeah, आर लाइक 93.9% chance that next weekend will be with MC Insane, but there are still 7%, 6.3% that 6.1% that he might not be. But yeah, ज़्यादातर यही है कि he will be there. ये करना ही है और भाई, देखो करना है भाई यार. All about education. मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम किसी को मत लाओ, बस तुम अतुल भाई को खींच के लाओ जैसे तैसे भाई करके भाई बस। भाई इनको भाई लेके अतुल आओ भाई, भाई हाँ ऐसे। कलमिंग भाई अतुल को भाई बस, अतुल जरूर भाई लाना आप अतुल यहाँ भाई खींच को। के आओ। इनसे जो हाँ वाइब अतुल अतुल भाई भाई मैच को होगी ना जरूर वो लाना पीछे किसी को आके ना और देखो करेंगे सुनो लाना भाई। सुनो सुनो एक मिनट ना, एक मिनट, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं कुछ नहीं जानता, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करो, स्क्रीन शॉट लो, टैग करो अतुल भाई को, भाई आज मैंने कलामिंग से बात करी, साफ सीधी बात। क्योंकि भाई अपना भाई स्टार बनने वाला है और बाद में काम आएगी ये चीज कि कर हमने दिया बात भाई करी कर भाई दिया कलामिंग फैनिंग से। स्टार बन गया है। हाँ हमने बात भाई। करी कलामिंग से भाई, थोड़े फील हस्ती का आती है, लड़का अभी मजा आएगा। सेलिब्रिटी सही बन गया। बात है ब्रो, कलमिंग मैंने भी आज फॉरएवर। बातें की कलमिंग के साथ. चलो 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 बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच गाइस ठीक है आई हैव टू गो हाँ फॉर अ रिकॉर्डिंग थैंक यू सो मच चलो पॉजिटिविटी एंड दिस इज एजुकेशन भाई दिस इज नॉट अ अतुल भाई। फैन मोमेंट दिस इज नॉट अ क्या दिस इज एजुकेशन ब्रो वी नीड टू यार एजुकेट दिस द इज Okay. ऑडियंस यार एक बार तो Yeah. पक्का बढ़िया होगा। बढ़िया। Also, oh, listen, everyone. Main important thing. Podcast is live on YouTube. मैं अभी बस कर रहा हूँ उसका अरे ऐसे public. चलो भाई हाँ इसीलिए करो वो करो मैं पीछे यही बैठे हम पूछने वाला देखते हैं, हैं। कर दो। मैं यही पूछने you हाँ. वाला था भाई को। you see that podcast now you will know bro you will not know me you will know यस how things या work in life to be honest या
एग्जैक्टली। तभी तो बन गया। सो बस चलो बन गया थंबनेल एंड मैं डाल रहा हूँ। अरे बस चलो ठीक है एवरीवन, ठीक है, आई एम लीविंग, थैंक यू सो चलो मच, चलो टेक भाई, केयर। बाय बाय बाय। ओके अतुल बाय अतुल बाय। भाई बाय थैंक यू अतुल ब्रदर। भाई। Thank you, brother. Peace. अतुल भाई टेक केयर ब्रदर। गए तो गए हाँ गए कोई ना। फाइनली हम चलो अच्छा मैं गए। चलो ओके चलो बाय गाइस ब्रो। ठीक है, बाय। मेरे को इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। अरे ओके बाय। प्रोफेशनल, अरे प्रोफेशनल मैग्नेट। ए प्रोफेशनल। ओ भाई। थैंक यू भाई। अरे अरे प्रोफेशनल यस ब्रो बोलो आईडी यार, भाई, सुन रहा हूँ। धन्य भाई, धन्य हो गया इंस्टा भाई। आईडी थैंक यू सो मच भाई, तुम अतुल भाई को लिया है। इंस्टा आईडी थैंक अरे यार, हाँ। मैंने अरे अभी ब्रो 104 स्क्रीनशॉट ले लिए। 104 स्क्रीनशॉट, आर यू मैड? हाँ, अरे रोज जब ब्रो भाई क्या मैंने भी पॉडकास्ट आ रिकॉर्ड, रहा है उसमें आई सुन आल्सो लो। रिकॉर्डेड द सेम। ओ भाई माय मजा आएगा गॉड। ना अभी। अरे यार, अरे यार ब्रो अतुल भाई से एक बात चीज तो बोलना बहुत भूल गया। सेम। अरे प्रोफेशनल भाई, कलम कोई सुन के प्रोफेशनल। नया रैपर बनेगा भाई मेरे। हाँ अरे सुनो, आपको पूछिए। ये पता है क्या, जैसे कि मैं ना एक मतलब छोटा मोटा मैं वो कवर सिंगर हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मुझे अपने ओके, स्पॉटिफाई में अपने जो वो डालने हैं मेरे को कवर, तो उसके क्या मुझे मेरे को वो लगेंगे चार्जेस? मेरे पास ना एक बंदा है जो हाँ बेला के गाने डालता है, हाँ तो मैं उससे पूछ के आपको बता सकता हूँ। हाँ जी। मैं या और अगर वो रेडी हो, अगर वो अलाउ करे तो मैं आपका कांटेक्ट नंबर भी आपस में शेयर करा दूंगा, तो ओके दैट विल बी इजी फॉर यू भाई बेला को और ऑल्सो। उसका ओके भी तो ओके। बीफ चल रहा है पतंग है क्या कर्मा पतंग? का। क्या बेला का? पतंग बेला ने कुछ पतंग है क्या स्टोरीज बेला का? डाला था कर्मा से रिलेटेड, आई गेस। वो पूछते हैं अभी, फिर मैं बेला से पूछूंगा, मैं बेला को लेके आऊंगा मैं। यार कर्मा को ले आओ, एक बार कर्मा Bro, को वो ले आओ। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस पे डिपेंड करेगा एक्चुअली। क्या चीज? नहीं, हाँ you अच्छा can हाँ upload हाँ। cover songs, but like I think DistroKid will charge you, I think 12 या 13 डॉलर के आसपास per cover song. या यस। And there is one more website जो बहुत recently निकली है, ऑटो ट्यून या ट्यून जॉय करके कुछ है, एक और ट्यून डिस्ट्रीब्यूशन कोड। सर्विस ये है। वहां यस पे यस। फ्री है आई गेस कवर सॉन्ग्स। इट वाज फॉर 5 months आई थिंक। यस हेलो। यस या It यस। हेलो। was free for 5. Yeah, okay. I think it was free for 5 months. Okay. पहले 5 months पहले था कि it's free for just 5 months, what are you saying? It was free for just 5 months. नो ब्रो, मैंने एक्चुअली इसका आज ऐड पहली बार देखा था एक्चुअली इंस्टाग्राम पे, सो आई अच्छा। एम जस्ट अज्यूमिंग। हाँ अभी भी चल ओके रहा ओके। होगा फिर उनका सही में। हाँ चल तो रहा है वैसे, ओके। मैंने भी डाउनलोड किया है वो। 1.5 GB का है। 1.6 ओ, GB। हाँ one thing, has anyone used aval platform, aval distribution services? ना ना। No Aval, no. no. Nope. I've used Amuse, but not Aval. aval में accept होने के बाद I have no idea कि करना क्या है, because people have told me good things and bad things both about it. Hmm. Hmm. I have no idea, brother, about this. Seriously. हाँ, ओके, तो आप सभी जाके कर सीधा दी वीडियो लाइव। पॉडकास्ट को देख सकते हो अभी। हाँ अभी पता भाई, नहीं अभी क्या हो रहा है, अभी पब्लिक हुई या नहीं। मेरे इधर पेंडिंग नहीं दिखा रहा है हुई। मेरे को, मे बी शायद हो गई हो। हाँ नहीं हुई। नहीं हुई And नहीं, it's on डायना the, भी बोल रहा है यार। it's not on my main channel. It's on the हाँ second ठीक channel, है, ओवर द like the वेव्स। separate Over the Waves channel. कौन सा ओवर द हाँ वेव? There's another ओके। ओके channel, ओके। is it? Yes, yes, हाँ yes, yes. या। Wait. I'll give you the link here अरे in the chat. प्रोफेशनल मैग्नेट से चैनल्स पे जाके हो जाएगा, वहां से देख लेंगे Okay, ना। peace. I'm gonna search for it. Yeah. Done. Got it. हाँ Okay. I also, bro, hi, I या। bro. have message you. Mine Instagram is hi polar dot music. That's me. वेट कैन यू ओके रिपीट? आई एम हाई गोना। डॉट lar पोलर dot डॉट music. म्यूजिक, या By आई the way, गॉट। guys, या my गॉट name यू। means exactly what you think it means. It means having to do with bipolar, and Yes. I'm using my name to spread awareness about mental health. So yeah, that's what my name means. Oh, okay, ओके okay. ओके। That's nice. ओ नाइस। Hey, Okay, so my video is in processing. So
देखते हैं जैसी प्रोसेसिंग होगी इट विल ऑटोमेटिकली अरे अपलोड। अरे मेघनाथ भाई, हाँ भैया। सुनो, जो ये अभी जो वीडियो बनाई है तो उसकी एडिटिंग एडिटिंग होगी क्या, जो अतुल भाई से जितने भी ये क्वेश्चन वगैरह एडिटिंग, पूछे? हाँ इसकी तो एडिटिंग ये होगी। तो ये अपलोड कौन से चैनल में होगी, आपके या फिर अतुल भाई के? ये भी है ना ना, यही नहीं, इधर ही होगी, ओवर द वेव्स पे ही होगी। ओवर द ओके अ, वेव्स, हाँ। ये होगी मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे, कमिंग वेंसडे या ओके। फिर थर्सडे। क्योंकि वीडियो बट वैसे आज भी पॉडकास्ट है। अ, वीडियो बहुत दो लंबी है दिन ब्रो, 1 घंटा क्योंकि 18 मिनट। अरे ब्रो, वैसे भी 4 घंटे बात तो कर ली अतुल भाई ने। ऑफ कोर्स, इसलिए मैं वही तो। उनको इधर ले आया था। मैंने बोला यार बहुत सारे लोग मिस हो गए, तो अब इधर जनरल आके एक बार सबसे बात हम्म, करो। सही किया। हम्म। हम्म। भाई अगले तो हफ्ते पूरी वीडियो कितने आप मिनट सुनो का? तो सुनो, अगले हफ्ते हाँ। आप एमसी इंसान को लाओ ना लाओ, आई हम्म। डोंट इंसेन, इंसेन। आई डोंट एफ केयर, ओके। बस अतुल भाई को ओके। खींच के लाओ, बस अतुल भाई को खींच ठीक के लाओ। ठीक है नहीं नहीं, ब्रो। एमसी इंसेन इज द डोप बट आर्टिस्ट जो ब्रो। केयर करते हैं उनके लिए तो लाना पड़ेगा ना। भाई बहुत ब्रो अच्छा हर आर्टिस्ट आर्टिस्ट था। ना तुम्हें अलग चीज सिखा के यार जाएगा, पता अतुल है। भाई भाई के वही, नेक्स्ट लेवल दैट म्यूजिक है। फील भाई। एमसी सेन का फ्री स्टाइल सुनना कभी। ऑफ कोर्स। एकदम एमसी सुमेओ को क्यों बुलाए, तुम्हारे किसी के तुम्हारे साथ। लिए बुलाओ भी भाई। लेके आना। वो भी बहुत अच्छा है। सुमिया को भी लेके आएंगे भाई। सुमेओ वैसे की बहुत अच्छा है। यहाँ डाउन पे टू वो अर्थ बंदा है यार अतुल वैसे भाई। अतुल भाई से वो किसने किया था क्वेश्चन कि आप उस कंडीशन से कैसे बाहर निकले? हाँ यार वो वो किया शायद वो था चला गया। जिसने भी किया था भाई, कसम से तुम्हें जीना तो पड़ेगा भाई इसके साथ, प्रवीण मैं भी सिंह। जी रहा हूँ। अरे भाई वो, मैं वो भी किया जी था रहा यार ये डीजे सारी शायद बातें से खालिद। तब छोड़ो से यार। उठा है यार, कुछ नहीं हूँ। होता। सबके साथ मैं अब मोटिवेट तो हो कुछ गया हो ही नहीं मैंने। सकता यार। मैं भी हाँ जी यार रहा हूँ इसमें कुछ भाई। नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई बिल्कुल। साला सबके साथ है ये, अब तो कोई अब रोक ही नहीं सकता भाई। कोई तुम्हारा हम्म, किसी के साथ तुमने प्यार किया है तो तुम, हाउ कैन यू अनलव समबडी, यू कैन नॉट वही तो। अनलव देम। आ, हाँ भाई कल अभी हम If you can जस्ट लाइक unlove माय someone, स्टोरी that ब्रो। means you never loved them in the first place. मैं सच्ची बोल फैक्ट्स। रहा हूँ, कल भाई उस वो। बंदी ने मेरी स्टोरी देखी है, ठीक है। हम्म। अरे मैं भाई सुनो तो, तो उसने मेरी दर्द। मेरी स्टोरी बंदी देखी। मेरे को भाई छोड़ देगी अगर मैं अभी नहीं गया उसके पास। मेरे 4 हाँ, बजे रात के। सुनो तो, ठीक है, उसने मेरी स्टोरी देखी। भाई हाँ। पता नहीं क्या हुआ, मैं पिघल गया बहुत गंदा वाला, मैं रो पड़ा भाई बैठ के, पता नहीं क्यों। ओ माय अरे गॉड। यार सबके साथ है। ओ भाई माय मतलब गॉड। 4 साल काटे इतने मुश्किल से प्यार से, फिर सीधा ब्रेकअप भाई। क्या बात थी ये? मतलब होता तूने है यही चार यार, तो साल होता है यार इंडिया मतलब में। तूने चार बहुत साल बुरा मेरे भी साथ झक लगता है। मारी, दिमाग खराब। इंडिया में फिर नहीं ब्रो, मैंने हर टाइम, जगह यही होता है। फिर कल अब मैंने उसका टाइम वेस्ट वो लगता गा है। दिया मैंने। गोल्ड डिगर कल मैंने करेगा गाना वो। गा कोई ना दिया फिर यार, उसके लिए। चल। कौन चल सा, करो, चल हट मैंने 4 साल बहन मेरे की, को वेस्ट। वो बस वाला। हाँ, कौन सा? चल हट बहन की लोड नहीं लगे। नहीं 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 नहीं, लौड़े लगे रो, लौड़े लगे, दुनिया का झोल समझते। Guys, एक बहुत बड़ा competition just launch हुआ है. Um, हाँ yeah, हाँ। guys, there's a very big competition जो free है. It's for all genres. Worldwide acceptance है. And हम्म June 3 से voting start होगी. You can enter this competition now. Um, हम्म ओके। basically, ये competition होने वाला है डीजे खालिद की तरफ से. भाई The डीजे साउंड competition आ is खालिद। रहा है। completely, yes, this competition is बहुत शोर आ completely रहा है। free. श्रियांश Yes, म्यूट योर the माइक cash ब्रो। prize is 50,000 rupees, $50,000, $25,000, a call with DJ Khaled, etc., etc. ओके। Um, yeah, and guys, it's completely free to enter. Please enter. It's being hosted by World Scout. Yeah, it's being hosted by World Scout. You can find details, regarding that on their profile, basically. Oh, या that's डेफिनेट। nice. Okay, guys, do you got the message? हाँ भाई, सो सो पार्टी हाँ होती है जितना भाई यार। सो मर्जी जाओ चले, भाई। you just साहिल participate. भाई You सो जाओ। never know कि तुम्हारा कहाँ क्या You have क्लिक to हो. participate, and guys, I'm going to definitely participate as well. And the reason I'm trying to pitch this one to you guys is because my not my company rather, but the company I'm signed to rather are the ones who are co-launching this competition. So I definitely want a strong Indian representation also, and it's completely free, guys. किसी की भी life change हो सकती है. So yeah. हम्म। सही है। साहिल भाई मैं भी रैप क्वेश्चन। कॉम्पिटिशंस रखने वाला हूँ कुछ ही टाइम में। यार सोचा हुआ है कॉलेज मैंने। वॉलेज होगा अरे आपका, सो जाओ रखो जाके भाई अब। रखो प्लीज। But I All will be giving languages out allowed, cash right? prizes. Yeah, sure. Of course, bro. Doesn't matter to me.
Guys, come on, mute your mics. Professional magnet is not accepting friend requests. Nice. Where? Where? On Discord? Discord, yeah. ओ यार ब्रो, मेरे को चलाना ही नहीं आता ये। मेरे को सच में नहीं, ये कहाँ होता है? ऐड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में पेंडिंग। आई डोंट आई नहीं, आई आई रिक्वेस्ट ही ऑफ है यार, आपकी नहीं जाएगी ना। ओह ऐसा अच्छा। तो भाई अब अरे ओके मैग्नेट ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरे को चलाना ही नहीं आता है, इसलिए मैंने मॉडरेटर मैग्नेट रखा सुनो। हुआ था। वो भाई उसने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, हो गया आज, नहीं तो ये हो नहीं पाता पॉसिबल। बट एनीवे गाइस, अभी मेरे वाओ। को सीरियसली जाने दो, क्योंकि वीडियो प्रोसेस करके मेरे को पब्लिक भी करना है। ओके, सो चलो चलो फिर जाओ थैंक यू सो जाओ मच जाओ। गाइस अगेन यार सोना फॉर नहीं है भाई यार गिविंग मी। नहीं आपको, ये तो बताओ। आपको आपकी ब्रो बंदी इट्स उछाल हसल, क्या उछाल के बोलूं। मारेगी, 4 घुसा बजे घुसा छुट्टी के और सुबह मारेगी। फिर उठना चलो जाओ जाओ। कॉलेज वॉलेज नहीं है क्या? नहीं मैं इस नहीं, मैं महीने अभी आया जाना होगा कॉलेज ना। से। इस महीने छुट्टी है। चलो अच्छा अच्छा। मैं अरे कॉलेज से अभी आया हूँ। अरे वैसे सुनो यार, ये वैसे चलो फिर गाइस अतुल, मिलते हैं। अरे सुनो थैंक यू सुनो तो ये वैसे थैंक यू। ये वैसे अतुल हाँ भाई ब्रो, का वो हाँ कहाँ कल है? तो नहीं घर आया पता है जाएगा, किसी क्योंकि को? अभी सोऊंगा क्या ही क्या? लेट, तो जल्दी नहीं उठूंगा। किसी को कब जाना है घर पे? किसी को अतुल भाई आऊंगा। का घर पता है? यार इतना मालूम है, हल्द्वानी में आई गेस। चलो ठीक है, मैं हाँ पहुंच जाऊंगा, हल्द्वानी मैं में। पहुंच ओके जाऊंगा। यू गाइस मैं पहुंच कंटिन्यू, जाऊंगा। मैं जाता हूँ। ओके ओके भाई, ओके, बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय ब्रदर। जल्दी मजा आया जाओ, यार, नहीं बहुत तो मजा बंदी आया। तुम्हें वो पेल गई। 7 दिन ओ बाद भाई। गए, आ तो गए, चलो। तो भाई मजे आ गए, शुक्रिया, कटी जाए। यार ठीक है भाई, अभी अरे यार, चलो भाई। अरे लो। यहाँ पे, अरे यहाँ पे फ्री फायर का नुबड़ा कौन है? यार कौन बस था, कौन था? नहीं यहाँ पे कोई नहीं था है। भी कोई फिर। वो हाँ हाँ, वो लाइव कर रहा था बंदा। आ, यार